We can see one more example of resonance. This is the case of resonance. You see, the if the frequency of sound from the trumpet exactly matches one of the normal modes of frequencies of the goblet, the resonant vibrations of goblet have such a large amplitude that it tears itself apart. ये पूरा देखो ब्रेक हो गया पूरा. अगर इसकी frequency जो है, every I told you every structure, every body has its frequency, one or more frequency है ना. They have the multiple frequency. उसको normal mode बोलते हैं. Either this frequency or next one or next one or next one. If that frequency matches with the frequency of sound, it will oscillate with the large amplitudes. Inward or outward also, I say, it will vibrate. You can see the videography of this is also available on YouTube. How the vibrations take place and finally it tears apart. क्योंकि it has some elastic strength, इसकी ultimate strength cross हो जाएगी, then it will break. That is the case of resonance. With the help of sound, you can break this glass. Okay, this is the example of resonance. And one more point, ये last में question discuss कर रहे थे हम लोग. Once more we'll see this. Question was this: if you drop the object in the tunnel dug through the center of the earth, it proves that it has the simple harmonic motion, and find out the time period of its oscillation. So when you drop it, suppose it is here at d distance apart, center से distance जो होगी, that x will be r minus b. Right, x is center, from center upward, or g is downward. ठीक है, g depth is downward. So both are opposite, है ना. G depth का formula लिखा, g in bracket 1 minus depth upon radius of the earth. LCM ले लिया, r minus d को x लिखेंगे. Now g depth is downward and x is upward from the center. तो यहाँ पे gd कर दो. gd and x are in opposite direction. Now therefore SHM, therefore this represents simple harmonic motion, and इसका time period निकाल सकते हैं. So this can be written as, okay, just I will write it once more. So g depth, this will be g net, है ना, net acceleration minus g by r into x. So since g net or acceleration, net acceleration is directly proportional to x, in opposite direction minus b है, therefore SHM, all right, and SHM, and time period will be 2 pi under root of this thing inverted, and r ऊपर जाएगा, g नीचे आ जाएगा. R is the radius of the if you put the value of r 6,400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, and g 9.8, so t will be nearly 85 minutes. This object will go down quite a fast. It is 85 minutes coming back to same point, है ना. Means half of this 42.5 minutes will be going to other end of the earth, which is 12,000 kilometer, 12,800 kilometer, again 12,800 kilometer coming back. So it takes only 85 minutes, quite a fast, but practically these things are not possible. We cannot dig the tunnel through that hardly, I don't think more than 200 kilometers any tunnel has been dug, because temperature inside is very large, very high temperature. The machines or drilling bits don't sustain there, they get melted there inside. So it's very difficult to dig the tunnel inside the earth after certain kilometers. अर्थ के अंदर ज्यादा नहीं जा चुके. I don't know, I don't think it will be record more than 200 kilometers inside the earth, but above the earth we have gone billions of kilometers away.
but inside the earth, hardly inside, not much. All right. So this question is also the part of the simple harmonic motion. ये समझ में आ गया था. ये वाला देखो, ये क्वेश्चन क्या था कि बॉब को अगर एयर, the bob of the simple pendulum executes simple harmonic motion in water with the time period t, while the period of oscillation of bob t naught in air. वाटर में t है, एयर में t naught है. Neglecting the friction force of water, friction force means viscosity, and given that density of bob is this much, what is the relation between both? When we submerge the bob inside the water and oscillate, so because of upthrust, restoring force is decreasing, the full time period will increase. So it will oscillate slowly inside the water because one more opposite force coming into action. ऊपर force आ गया, है ना? तो it will reduce the restoring force of the bob. कितना reduce करेगा? Buoyant force उसके ऊपर लगेगा. Buoyant force का फार्मूला होता है volume inside into liquid density into g. तो volume is equal to mass upon density, because density is mass per unit volume. Volume को चल जाओ, density को नीचे. तो volume of the body is its mass divided by its density. Mass has been taken common and नीचे भी mass है, cancel हो गया. G also take common लेके यहाँ पर sigma by rho, है ना? तो G net put कर दिया यहाँ पर. G net की वैल्यू ये वाली यहाँ पे put कर दी. तो we get this. Now suppose if density of liquid, okay, now you can put it. अभी relation देखो. Air में जो था वो ये रहेगा. Air में we will have the relation 2 pi under root of L by G, और water में T is equal to 2 pi under root of L by G 1 minus sigma by rho. यहाँ पर देखो, if you see carefully, T pi under root L by G is nothing but T naught. It comes like this. ये relation भी बन गया, समझ लो. Now we can, this is in the water, this is in the air. Now you put the value and you get the one of the options matching. 1 minus sigma is 4 by 3. Sigma is of the liquid, that is 1000. And density of the bob has to be more, otherwise minus आ जाएगा रूट के अंदर. अगर तुमने मिस्टेक कर दी, density of bob ऊपर लिख दी, तो रूट के अंदर minus, something is wrong. It means it is not floating, it is not oscillating, it will be floating. अगर bob की density कम हो गई, it will start floating, है ना? It will not oscillate. Therefore time period में कुछ minus आ जाता है, रूट के अंदर minus आ रहा है, इसका मतलब you are doing something wrong, फार्मूला wrong हो गया, कैलकुलेशन wrong हो गया, है ना? तो इसलिए रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आना चाहिए. तो 4 by 3, 4 here, 3 ऊपर चला गया, 10 to the power 3, get cancels. LCM ले लो. uh, 4 minus 3 by 4, तो ये 1 हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा. 4 रूट के अंदर है, ऊपर आने के बाद बाहर आ जाएगा रूट से 2 नॉट, 2 into T naught आ जाएगा. All right. So this is the question when we oscillate in the liquid. कभी कभी वो डेंसिटी ना देके यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी दे सकते हैं, this much. तो डेंसिटी निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. That already done in the fluid. So this question also we revise. Rest of the things were done, no problem. They are okay now. One more question is there in NCERT book में, देखो. Question ये है, circular disc of 10 kg. Let me hold it like this. Circular disc of 10 kg is suspended by the wire attached to the center. This is the diagram I have made. The wire is twisted by rotating the disc
एंड इसको डिस्क को ऐसे रोटेट कर दो तो वायर विल गेट ट्विस्टेड, तो फिर वो वापस उसको अनट्विस्ट होगी एंड विल ब्रिंग बैक द डिस्क टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बट बिकॉज ऑफ inertia or moment of inertia, it will overshoot and then oscillate. So this type of oscillation is called torsional oscillation. उसका period दिया हुआ 1.5. Time period of torsional vibration is 1.5 given. We will just highlight it, and then the radius of the disk is 15 centimeter. All right, determine the torsional spring constant of the wire. Torsional spring constant of the wire निकालना है. तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सिंबल्स मिक्सअप कर दिया अगेन. टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट उन्होंने अल्फा दे दिया, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो देयरफॉर आई एम चेंजिंग इट टू सी. ठीक है, टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट इज सी, इस वायर का टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट इज सी, इज डिफाइंड बाय द रिलेशन. व्हिच रिलेशन वी डिफाइन इट? लेट अस सी व्हाट इज ओरिजिनली रिटन हियर. J is equal to minus alpha theta, where J is the restoring couple. Couple किसको बोलते हैं? टॉर्क को बोलते हैं. We call it torque, so we'll give the symbol of torque here. और ये सी देते. Now ये भी torque हो गया. So now things are in line because we cannot use alpha here because alpha is for 2 alpha हो जाएंगे, यहाँ पर एक alpha इसमें भी आता है. So therefore we have to be very careful. Now this thing, now torsional pendulum is also done. It is nothing but similar to the angle. It is making the angle. The formula of angular angle will be used, है ना? So tau is equal to minus something constant. वहाँ पे हमने शायद k लिया, वहाँ पर टॉर्शनल के लिए ओमेगा लिया था वहाँ पर, है ना? प्रीवियस क्लास देखो यहाँ पे जो पेंडुलम का किया था ना, it was the angular pendulum. Did we use it here? So let us compare with that. ये देखो कल जो किया था, where it is. See, टॉर्क की यहाँ पे दो इक्वेशन बनाई थी, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और दूसरी ये बनाई थी आर क्रॉस एफ से. लेकिन यहाँ पर आई अल्फा तो कॉमन रहेगी, बट आर क्रॉस एफ की जगह वी आर यूजिंग सी. यहाँ पर जो टॉर्क है उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है. डिफरेंट मटेरियल विल है, वी कॉल इट टॉर्शनल कांस्टेंट. देखो where it is, we call it torsional constant. तो उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा हाउ मच इट कैन. तो यहाँ पर दिस इन प्लेस ऑफ सेकंड फार्मूला कल आर क्रॉस एफ था, another formula because this is twisting has been done, angle is also involved here. यहाँ पे एंगल हमें यहाँ ट्विस्टिंग से मिल रहा है, वहां पर साइन थीटा से मिला था. ऑलराइट, तो डायरेक्टली थीटा वी आर गेटिंग. तो सी द टॉर्शनल कांस्टेंट, है ना? टॉर्शन पर यूनिट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? टॉर्शन पर यूनिट ट्विस्ट. टॉर्शनल कांस्टेंट इज नथिंग बट, लेट मी टेल यू, बिकॉज इन 12th आल्सो विल कम अक्रॉस दिस पॉइंट. सी इज torsional constant also, or torsion पर टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. इसको हम बोल सकते हैं टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट यहां से डिफाइन कर सकते हो. देखो ये थीटा को इधर भेज दो, टाउ बाई थीटा, टाउ इज द टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. ट्विस्ट द एंगल. 1 रेडियन के लिए कितना टॉर्क लग रहा है? if we know for 1 radian torque is this much required, for theta radian we can get the total torque, है ना? तो this is the relation of torsional pendulum, है ना? In general, it is relation for torque in case of twisting the wire or cylinder. Another relation we know, tau is equal to I alpha. दोनों को equate कर दिया. This value we have put it here. Now what we get is alpha angular acceleration, है ना? और यहाँ पे I को नीचे भेज दिया. But if you don't change the symbol, इधर भी alpha आ जाएगा. You will get confused. Therefore, I have changed the symbol C.
है ना. So now this has to be omega only. Compare with alpha is equal to minus omega square theta. So therefore, omega square is c by I, or omega is root of c by I. Therefore, time period is 2 pi under root of I by c. ठीक है, under root of I by c. You put the value here. Now, after putting the value, the c is to be calculated. I कितना पुट करेंगे, ये कितनी वैल्यू I निकाल लेंगे पहले. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाउ मच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. It is rotating about its central axis. It is rotating like this. Rotating means just partial rotation, not full. Central axis से rotate हो रही है ऐसे. कितना होगा moment of inertia of the disk? mr square by 2. Half mr square. So now everything is given. Time period is given. 1.5. Disk ka radius is given. Is it mass given? Yes, mass and radius both are given. And we have total 3 constants, 1, 2, and 3. So C is to be calculated. Now you can just calculation part, you can complete it. All the rest of the things are given. ये mass है और ये, and then find out do you get the right answer? All right. So this was the question number 23rd. Now you can just make the note. We have made the 2 equation. Only thing difference, ये तो common है जो pendulum में है, and this is given to you because you don't know. Therefore they are given you how the torsional pendulum works. उसकी equation दे दी है उन्होंने. Because this part was not done earlier, therefore they will give you the equation. Then you can use your knowledge and get the right answer. All right. So let us just see one more point and then waves. देखो, now just think and tell me. I'm showing you next situation. This one. Just note down this, then I'll just change the page. देखो, tell me how to get this time period, कैसे find the frequency of the system. ये इसको पुल करके छोड़ दिया. It is small oscillation के लिए how much will be the frequency of the system. क्या फार्मूला होगा frequency of system का, बोलो. 1/2 pi m by k होता है टाइम पीरियड में, तो k by m, k net लिखना पड़ेगा. How much will be k net? Can anybody? 1 by k1 plus 1 by k2 है ना. तो k2 is not there. ये k1 है. Okay, k1 is k. k2 कितना होगा? y a by l. Do you remember? इलास्टिक वायर का हम लोगों ने किया था. k ये तो दोनों सीरीज में है. तो सीरीज में क्या फार्मूला बनता है? एलसीएम ले लेंगे तो इट विल बी k1 k2 अपॉन k1 plus k2. It was like this, 1 by k series or 1 by k net is 1 by k1 plus 1 by k2. तो एलसीएम लेके इन्वर्ट कर देंगे बस. You can put the values now. k1 is k, k2. You can solve it later on, but you should know this is a series combination. Series combination में k net is from this formula. This formula is nothing but this formula. एलसीएम लेने के बाद वो सेम आ जाएगा ना. ks कर देते हैं यहाँ पर भी. ठीक है, इट इज ks. यहाँ भी ks कर देंगे. both are same. k net means ks only है. ठीक है, तो this is okay. After putting the value, y the Young's modulus, you know, a the area of cross section of the wire, l is the length of the wire, है ना. So this part is additional point. It is, you have to use your common sense and get the k. Already I told you. One more point I want to ask you before we move on to the next chapter. देखो, ये अभी इधर तो spring है. This is the elastic wire. इसको हम ऐसे oscillate कर रहे हैं. Can you get the time period?
of the mass. You have to be careful in this case. Why? Because okay, you may be telling me, sir. Acha, chalo, can somebody try this? Can somebody try this? Somebody tell me the answer. Okay, we may write like this. Kp is equal to K1 plus K2 है ना. ये इलास्टिक वायर है. इसका वही YAL दिया होगा, यंग्स मॉडुलस एंड एरिया क्रॉसिंग एंड लेंथ. तो कुल उससे निकाल लिया हमने, K2 आ गया है ना. We got it K2 डायरेक्टली. इलास्टिक वायर है, इलास्टिक में रबर बैंड ले लो. चलो ठीक है, इट इज रबर बैंड है ना. थोड़ी देर के लिए रबर बैंड एज्यूम कर लो. नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है. तो यू मे थिंक ओके ऐसे लिखने से काम चल जाएगा, बट दिस इज नॉट करेक्ट. के नेट यहाँ पर जो के पी है, इट विल नॉट, इट इज नॉट करेक्ट. व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हेन यू ब्रिंग दिस साइड, मास को इधर लेके आ रहे हैं, तो बोथ आर प्रोड्यूसिंग द रिस्टोरिंग फोर्स, दैट द स्प्रिंग आल्सो एंड द वायर आल्सो. But when it comes back to mean position and when it moves this side, what is happening here is, क्या हो रहा है इसमें, देखो क्या होता है इसमें. It is not the usual vibration. देखो, it is not the usual vibration. ये मास जब इधर आ गया, सेकेंड पार्ट मेन पोजिशन से उधर चला गया है ना, तो that spring will produce the restoring force, all right, but this rubber band will get slack. It will not produce any that force in this direction. कोई force नहीं produce कर पाएगी. तो half of the oscillation is done by the K1 plus K2, so that will be T1 half, and T2 will be done by only इसका है, only by K1. ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा. ये T1 by 2 पार्ट हो जाएगा. बाद में T2 में भी T1 में क्या लिखना पड़ेगा, हाफ ऑफ द ऑसिलेशन में क्या लिखना पड़ेगा, 2 पाई की जगह पाई आ जाएगा. ओके, ऐसा हो जाएगा. 2 पाई अंडर रूट ऑफ m, मास ले लो यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ m, नीचे K1 प्लस K2, हाफ ऑसिलेशन ये हो गया. और जब ये इस तरफ चला गया, उसका हाफ ऑसिलेशन लेना पड़ेगा. उस समय रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, द स्प्रिंग फोर्स ओनली K1. रबर बैंड गेट स्लैक, तो उसका आधा. तो ये आंसर हो जाएगा. टी विल बी दिस पार्ट ऑफ द जर्नी, दिस पार्ट इधर का जो है दोनों रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. व्हेन ब्लॉक कम्स टू द लेफ्ट, रबर बैंड इज आल्सो प्रोड्यूसिंग द रिस्टोरिंग फोर्स, तो वहां पे आ गया, लेकिन आधा ही ऑसिलेशन हुआ. और रिमेनिंग इधर का जो ऑसिलेशन होगा, उसमें केवल द स्प्रिंग इज एबल टू पुल इट बैक and rubber band is getting slack, no restoring force, no helping back to go to mean position. इसका रोल खत्म हो गया. K2S is not there because it is rubber band. Generally हम लोग क्या पढ़ते हैं, both side spring is there, in any case both are producing the restoring force toward the mean position. तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, rubber band का पार्ट खत्म हो रहा है, so because it is getting slack. So these are the points you have to remember while solving the questions. ठीक है. All right, shall I change the topic now? Okay.